तो रेना ले लूं? तेरी मर्जी। जीरो ब्लाइंड ब्लाइंड नहीं है अपने पास एक पे। देख ले तेरी मर्जी, रेस लेना कि रेना लेना। They have no idea how heartless I am. कल वो मजा आ गया था यार, मैच चेंबर की ऑफ से एस किया कल मैच। ओपोनेंट भी लिख रहे भाई, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लिप किया कि नहीं? So now here is a man of principle, but you have broken rules before. मैंने पहली बार अपोनेंट वो चेंबर की ऑफ से पता कब एस किया था? जब पहली बार चेंबर चलाया था, उसके बाद नहीं हुआ फिर कभी। चेंबर लॉन्च हुआ था, मेरा अनलॉक हुआ 3 बार मेरा 6 किल वाला एस मिस हुआ 3 बार। मेरा होता ही नहीं है इसको, बड़ा बड़ा रेयर है। और क्या? तीनों बार मिस हुआ है ना, तीनों बार हम लोग जीतने वाला मैच हार रहे हैं। There. पीछे के कम B is empty. Plant the spike. There. 60 Spike down. मैं दे रहा था इस साइड से Enemy कवर। KJ 60 मरा है वो। ए लिंक अरे Gun तो here. बोल देते ना, मर गए प्लांट छोड़ के मार देगा। बुरा लगता है। Enemy spotted B. Out of charges. बंदा लड़ रहा है, रिवील करना। प्रो है। One reload. Devil friend you. Need a drop. Thank you. भाई स्प्रे भाई का स्किल तो नहीं हुआ है। Cutting their vision. अच्छा There. One enemy remaining. Killjoy sent a friends to me, Guardians. I'll break her apart. रेस के पास शॉटगन था ना? कौन दो बैक स्टेप कर दो। Bonne chance, mes amis. फुल शील्ड यार यूजलेस लगती है स्पेक्टर के साथ। Enemy C. There. The bombs me. They will cover. Rush. Nothing. Enemy remaining. Flawless. I thought I would have to work today.
Clearly not. गेम कुछ बोल रहा है क्या? तेरी आवाज कटी है क्या? एक गेम का डिस्कॉर्ड लैब एक गेम तो डिस्कॉर्ड काम नहीं कर रहा। Caution here. Bleed No, them no, no. dry. Deploying drone. Yeah. तू जाएगा ब्लाइंड दूं? कोई है दे अब दे। Cutting their vision. Reloading. Here. हेलो अभी आ रही साहब Might be FK there होगा। Zova, we need eyes on the enemy. Tell us where they are. डिस्कॉर्ड लैग हुआ था, कोई चीज नहीं। तो स्ट्रीम कर रहा हाँ दिन में गए थे और रात में भी GMI। Gun here. भूल के मजे आते। क्या था डेड गेम क्यों खेलता है? बोलने दो मैंने कहा ठीक है। Focus now. Eyes off कौन me. सी रेड गेम Take flight. Smoke down. Beacon down. मैं साला ऊपर चले जा रहा हूँ। Cutting their vision. 120 सेज एंड 40 रेज दोनों बैक स्टैब है। नो ओनली सेज बैक स्टैब। सेज एंटी एक्सट्रीम लो, ओपन भी लो। क्या बड़ी ब्रो बडी क्या वो पहले क्लास की स्टार्ट करता हाँ तो Enemy remaining. Last player standing. मैं एंगल पे था Open up the sky. क्या क्लासिक मारी इसने तू लो था I ना। got your backs. Just, focus on. Attackers win. चलो डेविल को अच्छा प्लस मिल जाएगा। लाल इतना डरा दिया मैंने। अभी तो सेज की जरूरत भी नहीं पड़ी 24 प्लस दिया, 21 प्लस 3, कितना? 21 प्लस 3 परफॉर्मेंस बोनस 24। मुझे 21 प्लस 20 मेरे को मिला मुझे 21। भाई प्लेट क्या? किलजॉय इधर आके बोल। किलजॉय प्लैटिनम 2 गोल्डन स्टार लगा मेरा मेरा को स्टार नहीं दिया, 21 तो प्लस दिया सीधा। अरे 2 बार उसको मारा ना मैंने, उसने नहीं मारा मुझे। फ्रिज में नहीं है। घर वाले आ गए तुम्हारे? नहीं वो फिर? देख वहाँ पे वो कांच वाला दिख रहा है, उसके बाजू में घर वाली वहाँ पे जैम हैं? दिखा? हां चलो दिख गया जोकर, आया 2 मिनट। फायदा उठाया जा रहा है घर वालों के गन्ना होने का। हेलो जोकर गया हुआ है अभी वो। Match found.
भाई योरू खेलना है अभी। योरू मतलब है डुलिस में कुछ और ले लो। लॉक मदर चोद। मैं ले लेता हूँ, ये जेट ले लेगा। कौन सा मैप है? स्प्लिट है, मैं ये स्मोक खेल लूंगा, तुम जेट खेल लो। नहीं तो वो खेलना, मैं ब्रिम खेल लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं कोई सीन नहीं है। देख ले डेविल, कोई वो नहीं है मेरे को। वो ओमेन अच्छा खेलता तो है यार, क्या ही है। क्या? ओमेन अच्छा खेलता है, नहीं खेलने दे। भूख नहीं लगा। हाँ तो खेलने दे, कोई बात नहीं। ये क्या तिजोकर घर वाले हैं, नहीं तो घर पे कौन है? अरे तो गेम पे ध्यान दे, हैं? गेम पे ध्यान दे। नहीं मेरा सवाल अलग है थोड़ा। हाँ। हाँ गेम कैसे खेल रहा है? ऐसे खाना बन रहा है तो तुझे तो गेम खेलना चाहिए। तो खाना बनाओ जाके साथ में। हाँ, तो बना रही है वो, मैं नहीं बना रहा अभी, मूड है ना मेरा बनाने का। सही है भाई। क्या बन रहा है? मैगी बन रहा है, वो लोग नवरात्रि फॉलो करती है ना, ये क्या करें। तू नहीं करता? ना मैं करता। मैं तुम में बस तो होती नहीं है ना शायद। नहीं, घर वाले मनाते हैं, मैं नहीं मनाता। और भी पी रहा था, मुझे लगा बंगालियों में नहीं होती होगी। तब देख जो लोग करते हैं उन लोग को भी पीने depend करता है, वालों सब को लोग नहीं तो मानते, लाइक खाने पे मानते, वो पीने पे नहीं मानते। मैं तो भाई दोनों पे मानता हूँ यार। मैंने देखा है वो तो मोस्टली बोला ना। पीने पे नहीं मानते लोग, खाते भाई खाते नहीं है। पी लेंगे भाई, लाओ आने दो आने दो बेंच। What brand are your मैं तो knives, प्याज Jet? लहसुन भी नहीं They're खाता not मुझे mammoth. फिर। Secret? I need one for my collection. नो अनियन नो गार्लिक। ये टाइजन में भी सामने ऐसा था है। लास्ट में जब सरेंडर किए थे लोग। क्या? टाइजोन नाम है इस बंदे का, हैं? मेरे को लग रहा है सामने वाला जो सरेंडर किए थे उनकी टीम में था ये। ध्यान नहीं है मेरे यार यूट्यूब इतने ऐड देखने लगा है, मुझे नहीं देखना अपनी स्ट्रीम पे ऐड, हटाओ। को। वैन ये वाला इंस्टॉल कर लेना, वैन यूट्यूब, मैं तो वही यूज करता हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट दिखने को नहीं मिलता। इतना नहीं करना है। कौन मारा ये? मैं गुस्सा आ रहा है क्यों? आगे आके नाच रहा गधा। Last player standing. नाइस ट्राई। योरू वेरू क्यों लेते हैं यार लोग, कोई काम के एजेंट नहीं। नाच रहा मेरे आगे आके मैं टिम्बर मार के मेरे को। यूरो इंस्टॉल होता है ना। हाँ Stand tall. मैंने नहीं इंस्टॉल नहीं था, यूरो के ऊपर रखा, मैंने कहा यूरो डोंट टेक यूरो टेक एनी अदर रीजन। उसने लॉक कर दिया। तो क्लासिक भी चाहिए लोगों को, इतने मतलब। अब वो तेरी है ना प्राइम, क्यों दे रहा है इस मादर? आके खड़े हो जाते हैं हियर हियर Reloading. हियर हियर। ले क्या? डबल मिड पे है। Here. आ गया यार, बढ़िया जा रहा था। Spike down mid. Last player standing. I will take back what is mine. Reloading.
तेरे डेवलपमेंट पे पुश करते होते हैं। Here. Cover going out. Shadows traveling. भाई साहब ये तो ब्लाइंड देखो यार मर रहा है साइड पे। Grounded. One enemy remaining. भाई तो पीछे खड़े होकर ब्लॉक ही कर दिया मुझे 2-3 लोगों ने। पीछे ही नहीं आ पाया, खा रहा हूँ गोलियां, मुझे बॉडी ब्लॉक कर रहे लोग। बॉडी शील्ड बना लिया मेरा कि लो तुम खाओ गोलियां, मैं बच जाऊंगा। मैं इसलिए कभी धक्का मुक्की में नहीं घुसता। Careful. भाई हेलो हेलो Good enough. आई थिंक Zotac. bro. -130 So good, bro. जो क्या Can't even remember the spike. मैं क्यों आगे जा रहा हूँ, नहीं जाना मुझे। मुझे लगता है यूरो देगा। हाँ डेविल 2 यूरो से मांग ले फुल शील्ड। कोई पास कोई अरे छोड़ो यार। Reloading. I'll cut through. Gun here. Cover going out. भाई तुझे क्लासिक की पड़ी है, मैं स्मोक दे रहा हूँ साइड पे। Shadows traveling. Gun here. 900 साइड हील कर दे। सॉरी जो भी क्लोज है रिवाइव कर दे। Remaining. भाई गजब चूत गया यार, गजब खेल रहा है। फुट 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 फुट। They're भाई all क्या living रिवाइव दिया in nightmare. क्यों दिया I was never scared. एक तो उसकी वॉल गलत थी। ब्रो Check general check. Bro, just check. आई डोंट वांट टू Bro, it's so good. भाई साहब सोवरेन स्टिंगर प्राइम एक्स फोर्सेकन नाइफ ठीक है, और ओनी गार्जियन ओरिजिन वैंडल So good shit. बॉडी Ever right there. Good one, bro. या ब्रो आई हैव नो लाइक Charges. Lock in sight. One party, chamber here, get back. One enemy remaining. Nice. Here. Nice. Pick something nice to kill them. रिवर I need a drop. चाहिए दे रहा हूँ। 800, can you? आप बोल रहे ड्रॉप के लिए, पहले नहीं खोल रहा था माइक कॉल के लिए। मेरे सामने मत आओ कोई। You want to play? Let's play. I'll handle this. Oh shit. Reloading. कुछ नहीं कर रहे Reloading. राइट है Enemy B. बंदे वहाँ पे। Last player standing. Spike down B.
इन लोग का सेफ राउंड है। हाँ वो thrifting हम चूतिए थे ना, 4 जगह से जा रहे थे, फ्रंट पे थे तो आते सब। ऑफर है एक 30 seconds left. Enemy remaining. You will not kill my allies. I got the spot. 10 seconds left. काट दिया चूतिया, उसने कटवा लिया। होके जा रहा भाई। Never show weakness. Ever. क्या सेव कर रहे हो, बंदूक ले रहे हो? एक ही साइड आ जाओ, 4 जगह क्यों जा रहे हो ये बताओ। ये आ रहे Spikes here. Chamber, back me up. Here. Watch this. Cover going out. Shadows traveling. Omen 104 and Chamber 105. Time to jump. वॉल हो गई है बनी क्या? एक वर्ड बच कर बस तुम Time to jump. साइड में गन पड़ी है। गन नहीं दे रहा। मेन पे 30 seconds left. Teleport's broken. वहीं था वो, तूने प्लांट भी बहुत हो दिया। प्लांट अगर कभी भी टीपी करना हो तो यहाँ दिया करो। अकेला हाँ मैं बहुत नहीं थे वहाँ पे, I know कभी भी करो I वहाँ am दिया by करो। your रिस्की होता है बट वर्थ इट होता है कि तुम बाद में लड़ तो सकते हो प्लांट के लिए। कवर में कोई चांस ही नहीं है बाहर से आके लड़ने का। ये सेज चच्चा ऑपरेटर किस खुशी में उठा रही है? And the spike is still in the बैंडल है तेरे पास, वन टैप ले फिर। क्या है बैंडल में? अरे सेज को बोलो ना बी मेन पे पीक करे। सेज बी मेन पे कर पहले पीक निकाल देना। उसको बोलो ना मैन। Don't pick, let's Sage. पंचूतिए हैं। Player standing. The dimensional fabric here is thin. I'll tear through. का फायदा नहीं, डेविल सेम स्मोक दे, मैं पुश कर रहा हूं। चेंबर जेट पुश कर रहा है, साथ में यही है। योरू आई मीन योरू। वो कट दिया, साइड प्लांट दे रहा हूँ। Spike down A. Last player standing. ये वाला लग रहा है अपन को सरेंडर देना पड़ेगा।
सही कह रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, साइट का मतलब नहीं पता है भाई। हेवन भाग रहे हो। मिडाओ सारे मयूर यहाँ पे ना उसको ब्रेक डाल के ना टैप पे दबा, बाद में तो इजीली ले सकते हो उधर। अब तो वो लर्क पे चला गया वो तो, और बन गया पूरा। अरे एक 148 मारा मैंने ओमन को। ऐसे मुंह पे से किल चुरा रहे ना ये गधे लोग, ट्रेड ले मतलब बेट कर करके खेल रहे हैं पूरा। नहीं सीएस पे शायद से मैंने मारा। सीएस पे शायद से मैंने मारा। इसकी बात कर रहा हूँ ओमन की। ओके नहीं ओमन को मैंने सीएस पे शायद सब गोली चला रहे थे, उसमें गोली लग गई लास्ट। देखो जब तक जीत रहे हैं तब तक कोई सीन नहीं। जीत ही नहीं रहा ना, ये राउंड जीत रहे हैं। ऑफ नहीं लाया था उनका जेट, अरे वो ऑफ सेव करेगा। जोकर को मिल सकता है किल। ये मिडे ऑफ देना। अरे मत लो Even with numbers, anything can still happen. तुम्हें लगता है वो तुम्हें ऑफ देगा? I need this. Thank you. I have extra money if anyone needs. Can someone get thank you? डेविल टैप दबा। देख रहा हूँ पास आओ मेरे और जी दबाओ। टैप ना यहाँ पे लगाया है। 148 and they jet 120. Wait, I'm landing side. Right blinded. Cover going out. One enemy remaining. हील तो दे देना। 40 ओमन खड़ा आ रहा है। क्या हो गया ब्रो? करा है उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस ही तो तोड़ना चाहता हूँ मार के। ठीक कर रहा है वो। Vent. मुझे उसका साउंड आया। Yes, side is on vents. Chin vents. हाँ चलेगा। रुक जा। पक्के हो जा। तेरा चलो। फ्लैश कर। मेरे सामने अरे क्या बोल रहे हो? ओके भाग वो स्मोक देते हुए भागा है। वो ऐसे स्मोक कर करके भागा है ना। Anyone gonna get to spike? Reloading. जैसे मिड पुश करो। वहाँ पे जाओगे मत। नंबर यहाँ पे ट्रैप मत लगाओ। भी मत जाओ। You guys can put I'm blinding. ये तो ना। Blinded. हील है। Healing you. Two people. Last round था। Down B. मेरे को मार क्या? चेम्बर नीचे था साइड पे कहीं। वही तो मैं देखूं ठीक है वन आ रहा है। One enemy remaining. ये कहाँ पे है अभी भी? अननोन। Unknown 80 पे।
ऑन साइट गए हम। वहीं छुपा था वो जगह। साइड Last player standing. 35 पिंग करेगा किस्मत तेरे को जाना पड़ेगा। Switching sides. हारने पे मुंह नहीं खोल रहे थे लोग, 2 राउंड जीते फिर मुंह खोल रहे हैं। बात करते रहो, क्या जाता है। क्लासिक प्लेस। नंबर पर एक खेलने दो। यहाँ पे एक वेंट लगा दे और यहाँ पे एक ट्रैप। ये क्या हम तेरे को बोल रहे हैं कि हम एक खेलो, तुम्हें एक खेलना होगा। मैं खेल दूंगा अभी। बी होल्ड हो जाएगा बिना सेंटिनल ये के। खेल ले, मैं शॉटगन ये उठा तो एक लूंगा लगा सकता है फिर तो मैं। यहाँ पे कहाँ लगाऊं ट्रैप बताइए। किधर वाला एक किधर लगा, एक किधर लगा। फर्स्ट एक ही आएगा तेरा, एक ही लगा दे वहाँ पे खाली। बाकी सब साइड पे कर दे। जो कराया तो बताइए, स्मोक दे दूंगा। हाँ Guys, they're coming here. Help me. हाँ पीछे जा पीछे हाँ क्यों बोला तू? टीप डाल के मैंने कुछ नहीं बोला। तूने हाँ केयरफुल सेज केयरफुल। मतलब समझ गया ना? Reloading. मुझे ओपन करके ले। तो वो नहीं किया। Nice. Side there. Bro, there is somebody. What the fuck? Nobody told. Spike planted. ठीक करेगा वो। Rekna was in that side. किसी ने नहीं बताया। हाँ, she pushed it. किसको पता था वो चीज? मैं तो तेरे पीछे था। कैसे बैठ के आ रही थी ये? यूं। पता नहीं ब्रो क्या बोल। I hate to say it, but ये वाला पार्ट छोड़ दो। probably ये जो पार्ट है छोड़ दो। आने दो। केयरफुल रहना वो। साइड पे खेलना सब। शॉटगन चला रहा हूँ। वो शॉटगन यूज करता है। बस नेक्स्ट बाय नहीं आएगा तेरा फिर। अरे वो हर राउंड शॉटगन चलाता है। शॉटगन तो शॉटगन खेल रहा है। तेरा नेक्स्ट बाय नहीं आ गया। 2 मिनट को बस हो गया मेरे को। अब किस खुशी में इसको I think B. I think B. Yes. No, they are coming here. Smokes. Yes. Here so far. Spike down A. No charges. Shadows traveling. Devil. कवर के लिए दिया। Spike planted. अरे नहीं यार FIFA भाई क्या तेज यार। एक साइड के अंदर पीछे साइड। Player standing. ब्रो सेज 48। My good and never ends. हमें तो हो ही नहीं रहा। कौन कहाँ जा रहा है? मैं हेवन आ गया क्योंकि साले बी तो आ नहीं रहे लोग। बी आएंगे अब भाई। देख राउंड चले जाना। हैं? हाँ ये और यहाँ पे एक जो OTP वाला आता है ना और इस दोनों को ही करेगा। पुश करो, पुश मत करना। वेट में स्मोक आया। देखेंगे। उधर नहीं तुम खा लो ना, मैं खा रहा हूँ। अरे नो कवर। 3 बंदे ब्लाइंड थे, ये बंदा पीछे आ गया। ये जा रहे हैं वो लोग। रोटेट कर रहे हैं शायद से। रोटेट कर रहे हैं वो लोग।
केवल टीपी कर सकते तू ठीक नहीं तेरा बीपी ये टीपी चेंबर कमिंग हियर ए रोटेट कर गया ऑलरेडी एक मिड पे रहेगा और ट्रैप probably ट्रिगर्ड एट ए एट मिड पे इसमें फिर शायद चेंबर साइट होल्ड कर दो। एक जगह भी मिड देखो ए पे ट्रैप ट्रिगर नहीं हुआ अभी, एक भी नहीं हुआ। ये तेरा लेफ्ट को या ट्यूब क्या हागा है भाई। अरे यार एक 40 गेटिव हेवन में अभी ड्रॉप हुआ सिटी आएगा ओमन आल्सो लो साइड साइट प्लांटिंग। एक अंडर One enemy remaining. ओके इज 10 लो। seconds left. दारू नहीं पीता। ए मोटी लेके यहाँ पे आ जाओ। I know what ये वाला ना you आने दे चेंबर इसको आने दे जो कर? लगा दे वेंट वाला ना बंदा तेरे को पता चलेगा ना हेवन में हाँ? तो हाइड कर सकते हो अब वो मैंने एक्चुअली जेट के लिए लगाया था ना, वो जेट खेलता वहाँ पे, तो अगर वो ट्रैप ट्रिगर होगा तो शॉटगन चलाएगा, इसलिए लगाया था। ठीक है मत ले जा। और मेरे पे आने दो मैं ये छोड़ दूंगा एक खाली वेंट किया कोई नहीं तो बस वॉल करके पीछे रहना, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं, वॉल करके स्लो अप तक चलेगा, तब तक आ जाऊंगा मैं। from them. वेट दो जोकर हाँ भाई इवेंट के बाहर भी है बी 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 जो पे मैं अकेला हूँ। यार ये साउंड भी पीछे है ना। राइट 2 people at least 2 here. साइड 1 fall back. Taking off. ये क्या स्मोक दे दिया मैंने? वो जाने ये गलती से हो गया। पी दबाया और लेफ्ट क्लिक हो गया। एक पी आया एक पी आया। नॉट फॉर रेनर है मैं वही करने पी एक बड़ी आई 2 One enemy remaining. नाइस नाइस। Spike down. ये ना भाई साथ में पीक नहीं देते गन। ये स्पाइक अपने पास है गाइस। देखिए मैं स्पाइक अपने पास है। ठीक है करना एकदम मतलब इवेंट ही आ जाओ क्या हो गया? मुंह क्यों बना रहे हो? मैं ट्रेड गेम 30 खेल रहा हूँ seconds ना, left. क्योंकि मैं ट्रेड हो रहा हूँ जब से। गेट क्या बी साइड फिर तो ये देख ले ये वाला कॉर्नर देख ले वो उसको वो देखने दो फास्टर कॉर्नर प्रॉब्लम सिटी आना चाहिए उसको Portal ये closed. भी कर सकता है। नहीं आ गया साइड 8 मेरे 10 सामने। seconds left. नहीं देगा, वो सेव करेगा। बस पकड़ना उसको यहाँ पे इस पे हमारे पास आराम से लेफ्ट है नीचे। साइड में अभी भी I'll make you remember. छोड़ दे। यार मैं सेव कर रहा हूँ मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो ना पैनिक में मेरे को बैठ एक इंस्पेक्टर दे दो मुझे। ऐसे भर दिया Thank you. सीरीज तो आज बहुत धीरे नहीं आ रही। जा तो मिट जा। साउंड नहीं है अभी भी कोई। मुझे लग रहा है ये आएंगे। बाहर आ जा अच्छा मिड पे भी मैं इसका स्मोक आया। मिड में Cover going out. ये कर रहा। ये जाइए ये लोग डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। ऊपर पर कोई नहीं आया। कैसे Spike down A. 120 जेट ये लोग बाहर बैठा हुआ है बेबी। आई मीन ये बोलो चैम्बर। अरे Here. जेट लो है वन शॉट Last player standing. चैम्बर 70 Enemy remaining. चैम्बर 70 सिटी मैं बोलो प्लान कर दो।
खाऊंगा 30 seconds left. प्लांट करना प्लांट के लिए चाहिए तो कह रहा हूँ आराम से बी हाँ सुन लिया मैंने Spike planted. Shadows traveling. वीडियो प्लांट Cover going out. आप नहीं कर ले हाँ बाबा गेम में रुक जा हैं नहीं नहीं हेवन आ गया वो These new friends of ours are not. हेवन आया पीछे नहीं आया अपने ऊपर भी कर सकता था उसमें। कर सकता था बट ठीक है क्या अच्छा बढ़िया हूँ भाई तुम बताओ क्या हाल चाल बड़े दिनों बाद यार थोड़ा मुझे मतलब मोटिवेट करो ना मेरा एम नहीं चल रहा पीछे में मैं तो एमवीपी इसमें साला Get out of my way! भाई ओमेन अच्छा लगता है अब तेरे को ओमेन Bro, city. Omen city. पुट sorry 6-7 तेरे पीछे आएगा अरे दो लोग थे वहाँ पे मुझे लगा एक है कमिंग है Spike down A. Omen तेरे पास ही होगा स्विच की. अरे यार गोइंग बी Enemy remaining. there's someone Spike down A. 7-4 30 seconds left. गोइंग बी going good एकम रिलोड I think can ये हाँ इसका टैप है Player standing. वेट यार oh he comes coming side nice इसीलिए कह रहा था बेट टाइम ही है ना वो अभी से आएगा Wow, Sage! When Enough you turn it to on, move it you turn it on. Great work! भाई एक बात समझ नहीं आ रही कि इतने राउंड जीते लेकिन इकोनॉमी नहीं बन रही फुल सील के साथ गन आ ही नहीं रही एक भी राउंड में हैं फिक्स नहीं है इसलिए अरे राउंड जीतने पे भी इनफ मिलते हैं अगर हर राउंड मर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तो नहीं बनती इको तुम्हारा मैं खाना हो noob गया हूँ वैसे। स्मोक देना बेड पे ये राउंड Shadows traveling. चेहरा में एग्री कर दूं. ना ए वन माइट बी सेविंग द आई Heavy. थिंक से ये क्या हेवन आया था यार सरफ लेके बोला था बेड पे भी बन गया जेट है शॉट गन है शॉट ही है डोंट क्लोज डोंट गो एक एम शॉट ही है उस पे क्या बच्चा समझ रहे हो क्या अरे बच्चा नहीं समझ रहा हूँ बता रहा हूँ बगल में थे वो यहाँ थे खा जाता अच्छा हुआ इसने कॉल दे दी पास नहीं किया मैं दूर से गया अरे Devan. बंदा Spike planted. नहीं गेम भाई जान तेरा राउंड ओके स्टेज 120 टैग है वही स्मोक क्या पे आएगा ये Enemy remaining. छोड़ दे Last player standing.
सही है ना? Wants another death. Nice. अबे लैग हुआ मेरा। ओह शिट। मेरा लैग हुआ, मैं बटन प्रेस किए हुए था। Let's get these idiots. यार मैं क्यों छोड़ूंगा बताओ ना, लैग हो गया साला। क्या लैग हुआ तेरा? भाई मैं बटन दबाए था, वो अपने आप छूट गया, और बटन दबाए रखा था, वो अपने आप पकड़ लिया उसने। कल भी तेरे साथ हुआ था, याद है ये चीज? हाँ वही तो कह रहा हूँ, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। कितनी गाली दूं मैं उसको, क्या करूं बताओ। अरे यार पेनेवल राउंड सुनो क्या चैम्बर टीम में आएगा? व्हाट नहीं जेट तू भी थोड़ा लगेगा तो। किसको? हाँ वो तेरे को यहाँ से एक स्केप करके आया पूरा हेवन। सेज मेरे हाथ से बच गई ना, मेरे को 120 एक्टिवेट सारी मार दी मेरे को। तभी नहीं स्मोक दूं? देख रहा था ना ये वाला। सेज यू नीड स्मोक। तभी चैम्बर आती से यहाँ से आया मेरे को पिक करके। ओके दे एंटर्ड 35 चैम्बर 35 जेट। Gun here. दे दे। मैं बोल रहा हूँ स्मोक दूं, बोला ही नहीं कुछ। मैं स्मोक पकड़ के रह गया गुस्से में। अरे तो तुम्हें पता नहीं था ना वो दबे पावा ही। Spike planted. अरे ले लो है वो। अमन भी लो है। अरे चैम्बर नहीं हुआ वहाँ पे लगता है। लेफ्ट है जेट। डेड भी यहीं पे। Last player के अंदर है। standing. क्या कर रहा है? मैं क्या करूं? वहाँ पे जेट थी, वो उड़ी थी। अरे तो वहाँ ना पे वो ब्लॉक होता है ना वहाँ पे। तो याद रखता है। उससे एक के ऊपर आ जा, वो भी नहीं बोलेगा वो। तो पता तो है, पहले वो कुछ नहीं बोल रहे थे, 2 के लिए तो सबने मुंह चलाने लगे। मेरे को पहले बताओ ये लास्ट ये अभी इसने जो समझाया किसी को समझ आई क्या बोला उसने? मुझे तो नहीं इग्नोर कर। पता नहीं। Say something or anything. अभी तो मत बोलो। ए पुश Found everywhere, so nice. Come back. Woman unknown. Maybe Yeah, I know. ओमन भाई पास मिल गया। cancel. स्मोक कर देना मेरे पे। You will not kill my allies. One enemy remaining. तो ये क्या किया तुम लोगों ने? हाँ घूम के आना पड़ेगा तेरे को। लग रहा है मिड पे ही है। ये पे है। मैं आ रहा गन लेने, मुझे नहीं मतलब उससे। टीपी नहीं कर रहा मेरा बंदा। 118 चैम्बर आराम से। अरे यहाँ पे मार करो। बच गया, मैं टीपी करने वाला था। Their backs will be towards at least 9-12 हुआ है ऊपर। Can someone get this? कैसे दिलाऊं? फुल चील आ गई भाई मेरी पहली बार विद गन। थर्ड राउंड में आई थी ये, बाबा आई है 12 राउंड में 21 राउंड बाद। भाई साहब ये पे वो एक भी राउंड घुसे ये लर्क जब करने लगते हैं ना लोग इतना सारा, हम नहीं करते अटैक। You want to play? Let's play. हम फटाफट कमिट हो जाते फाइट के अंदर क्या करना। लोग ठीक देखो ना यार। नो कुछ तो पर ये स्मोक चाहिए? Cover going out. Blinding. टीपी डबे अकेला था क्या? Shadows. अकेला था। ना मार। दो है मिड पे स्मोक नहीं है स्मोक नहीं है। नहीं मत जाओ। इधर आई थिंक कहाँ? ओए
Spike planted. One enemy remaining. ये ए पे था। ऑफ कर रहा है वो। ओ वहीं आ गया। जा रही है। बोलो इतना धीरे धीरे क्यों जा रहे हो? Attackers win. धीरे धीरे पता ना नहीं। ना दौड़ के जाते हैं मैच को। चलो खेलो तुम लोग, बाद में आता हूँ मैं, ठीक है? ओ बुला रही क्या? यो रुको मैं आ रहा हूँ, क्या है, कितना टाइम लगेगा? भाई खाना खाने जा रहा हूँ, देखता हूँ आऊंगा दोपहर में। लगेगा ही, समझो। बाय 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 बाय। बाय भाई बाय, हैव फन। मुझे क्या पता था घर में 2 जेट हैं। ए भाई साहब, गेंशिन वेंशिन खोलें थोड़ी, वही ग्राइंड कर लें। भाई उसको खोल के चलो खोल लो। प्रोटोकॉल फैंटम आई स्टोर में आज। ये कौन सी है बे? भाई ठीक है, आओ गेंशिन के। प्रोटोकॉल कौन सी है? अच्छा जो मेरे पास है, सॉरी। ठीक है, अरे इसी चौथ की इतनी ज्यादा पता ही नहीं है मैं जिसकी क्या है अपने पास है नहीं है। ठीक है भाई। हाँ भाई ठीक है, यही है, इसलिए तो आ जाते हैं कैरेक्टर अकाउंट के अंदर जो हमारी तरह थोड़े ना खिलसते रहते हो। Don't do it. What I did nothing. I did not do anything, my friend. I am innocent buddy. ओहो देखो, नीम झा आए हैं। अरे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़े बड़े फोन, छोटे छोटे आईडी कार्ड। बड़े बड़े फोन, आईडी कार्ड की पता ही नहीं क्या होता है क्या। रिस्टार्ट कर रहा हूँ एक बार पीसी अपना। बोंदू भाई मैं पहले ही चला जाता। नहीं भाई, जाने के लिए थोड़े ना बोलते हैं यार। गेंशिन खेल रहा था वैसे, मैं देखना हो देख लो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी भाई। तुम काय को यहाँ आओगे भाई? तुम तो मतलब समझ रहे हो। इतनी बार हाँ बोलने से क्या होता है, एक बार भी बोल देगा तो काफी है मेरे हिसाब से। डेविल के स्ट्रीम खत्म होने तक ट्राई करते एक भी शो जाए। मेरे अकाउंट को रोस्ट करोगे, एक कैम सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं क्यों ही सुनाई देगा भाई अब। मैंने क्या बोला? अरे तुम कुछ भी बोलो, मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो दबी दबी आवाज में तुम नहीं कह रहे थे एक विश तो हो ही जाए कम से कम। हाँ तो एक तो हो जाएगी। कल नील कहता कि एक सवाल है आपके लिए, आप एलॉय बिल्ड करोगे या नहीं? मैंने कहा ये कैसा सवाल है? मैंने कहा नहीं। कहता अगर हाँ करते तो मैं एक आपको 5 स्टार की बेलिंग कराता। मैंने कहा बड़ा चूतिया सवाल था तुम्हारा। ठीक है भाई, एकेएम को पूछो, एकेएम बोलेगा हाँ, फिर उसे 20 दिलाओ, गिफ्ट करो उसे 20। पैंचो ज़्यादा रईस हो तुम, करो गिफ्ट। काय की रईसी जैसी काम की जब एक बंदे मतलब दोस्त को अपने 20 दे सकते। कैथरीन बक चूती है। चला गया लगता नील सा। ठीक है, आज आपको एक सवाल है हाँ या ना वाला। हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं बेनेट C6 करूंगा ब्रो। तू बस 20 दिला उसे। मुझे पता है तेरा सवाल यही होगा। हाँ मैं बेनेट C6 करूंगा। तू दिला 20 उसे, भेज उसके अकाउंट में 9000
9 काय को 18 चाहिए। हाँ 9 में काम हो जाएगा ना, हो जाएगा 9 में काम। 9 में नहीं होगा अभी। 9 दे दो, बाकी मैं दे दूंगा, ठीक है। वाह सही में। Add हाँ, Astra. ठीक है नील, 9 तुम दे दो, बाकी मैं दे दूंगा जितने लगेंगे। सही में बेनेट Add Astra. ये पायरो यूजर है भाई, वो तुम्हें पता है, उसको कोई गम नहीं। यूला के साथ वो बेडू रख लेगा, यूनियन रख लेगा अटैक बोनस के लिए, क्यों? मेरी यूला की पार्टी में बेनेट नहीं है ब्रो। बस तो दिक्कत ही नहीं है। ओके 10th को करता। अरे यार ये गलत बात है। तेरी साउंड कट गई। वो कह रहा 10 तारीख को करेगा। 10 तारीख को करता। वेल कराएगा वो 10 तारीख को तुम्हें 9000 का बंडल। पैसा प्रीमियम हो गया मेरे पास। इवेंट कर ले। एंड कैसे हो, कैसे वो भी बताओ। एंड कैसे वो भी बताओ। कैसे क्या कैसे भाई, सुपर चैट कर दियो, वो पैसे अपने डाल लेगा, 30% कटेंगे, उसको कोई गम नहीं होगा, वो कर लेगा। क्यों है क्या हम? कोई बात नहीं, जीपे पे डाल देना भाई। नहीं जीपे नहीं है ना उस पे, इस पे जीपे थोड़ी होगा भाई। अकाउंट तो होगा उसके पास, आधार कार्ड नहीं पता उसको जीपे क्या ही पता होगा यार। सुपर चैट कैसे करेगा? सुपर चैट मैनेजर कर देगा ना, मैनेजर से बोल देगा वो अपने। नील शाह का मैनेजर नाम से आएगी सुपर चैट। हाथ यूज करके दिखा रहा मैं ऊपर बैनर का मैंने। स्क्रीनशॉट लगा के थंबनेल पे लगाऊंगा मैं कि रिची रिच तो चूतिया था, जो है वो नील सा है। मैं जाता भाई। क्यों भाई जाना क्यों है यार, तुम रुको। ये कौन? यामिको? ओ स्टोरी में यामिको, स्टोरी में यामिको, स्टोरी में यामिको, स्टोरी में यामिको। हाँ ठीक है भाई, कंट्रोल बड़ी कंट्रोल। एक्सपोज कर रहे भाई, एक्सपोज कहाँ कर रहा हूँ यार, हमें बिना मतलब का एक्सपोज कर डाला तुम लोगों ने भाई। तो लोगों को लगता है, लोगों को इम्पैक्ट AR56 57 गेंशिन इम्पैक्ट लाइव इंडिया AR57 लाइव डालो टाइटल INDIA AR57 57 हाँ, हेल्पिंग न्यू प्लेयर्स बिल्डिंग कैरेक्टर्स या बिल्डिंग आयाटो, कुछ भी लिखो। रुको मैं बताऊं टाइटल। नहीं तुमसे नहीं जानना, तुम हग मूत लिख दोगे उसमें, मैं थोड़ी वो डालूंगा। ईल्सा तुम घिनौने इंसान हो, नहीं बताओगे तुम। This realm is यार ये कितनी प्यारी है यामिको। आई नो बडी। if you ever haven't चुप रह, तभी तक घगू बहुत तो सुदाई दू ना हो। मेरा इवेंट पूरा हो गया, नया वाला इवेंट चालू कर दूं फिर क्या ही है। जिंगछू हो जाएगा C6 मेरा। जिंगछू थोड़ा ना मिल रहा है इस वाले में। इसी में तो मिल रहा है, आज तो नहीं मिलेगा। आज नहीं मिलेगा बट इसी में मिल रहा है। C6 नहीं है? नहीं C5 है भाई, गरीब हूँ मैंने नहीं डाले 1 लाख। मेरे भी कुछ सारे C1 है। अच्छा तुम्हारे कितने कैरेक्टर C6 हैं? एक रोजेरिया बस जैंगलिंग C4 है शायद मेरा 1। ठीक है मैं रुको देख के बताता हूँ, अभी वो चल रहा है। मैं बताऊँ कितने हैं मेरे? सीन चल रहा है, उसके बाद देख के बताता। 1 2 3 4। हाँ ये जो नील ने टाइटल भेजा ये डाल दे, अच्छा है। 5 6 7 8 कैरेक्टर C6 हैं मेरे। जिंगसूस 9 हो जाएंगे। गेंशिन लाइव हैं?
रख दिया। लो भाई नील तुम्हारी बात मान ली मैंने, भेजो 5000 की सुपर चैट इसी बात पे। अच्छा क्या कह रहा है? C6 कैरेक्टर देखने है ना? आयाका में F2P हाँ भाई F2P में चुप F2P हूँ मैं। नील ने बोल दिया मैं F2P हूँ अब तो हूँ। ट्रैवलर काउंट नहीं ना करना है? नहीं ट्रैवलर नहीं कर रहा काउंट, ट्रैवलर हटा के 8 है मेरे चीज C6 कैरेक्टर ही कौन सा? हैं। 3-4 तो होंगे ही एटलीस्ट। 2 3 लिखने में क्या जा रहा, सही है। 4 5 5 मतलब 5वां मैंने C6 किया नहीं है अभी। हाँ मतलब C6 ही मान लो उसे। मैं सोच रहा हूँ वेपन बैनर पे 10 पुल करूँ। करो 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 नहीं मजाक कर रहा हूँ। अरे आयाटो पे 10 पुल करना कौन सा आ जाना पैंच 4 स्टार मिल जाएगा सुक्रोस बढ़िया। नहीं चाहिए मुझे सुक्रोस, पता है मुझे जैंगलिंग C6 है मेरी। अरे अयाका के 4 स्टार चेक करने दो मेरे को, क्या आएंगे। अगर उस पे अच्छे नहीं हुए तो इस पे पूरे उड़ा दूंगा मैं। 4 स्टार आयाका के 4 रिलीज नहीं किया अभी उनने। अरे सोचने दो ना 2 मिनट रुक, दिमाग से पता लग जाए। आयाका के 4 स्टार फोटो खींच ली तुमने? मैंने हाँ भाई हेलो मेरे को वेंटी डेस्परेशन क्या सीन है तुम्हारे? कितने की पिटी हो गई? 20-25 शायद। ठीक है जाओ, ये आवाज मत निकाला करो भाई थोड़ा। नील सा स्ट्रीम देख रहा है, वो चला जाएगा अभी 2 मिनट के लिए। क्या हो गया? आयातो भी आ गया ब्रो। किसको? है मेरे को गाइड बनना है अब। ठीक है तो मुझे लगा तेरे पास आयाटो आ गया, मैं खुश। तो खुश हूँ। If it's useful, I'll take it. Useless. लीक्स हैं पक्का नहीं। आयाका के साथ चोंगयून है, मे भी एक फिशल रेजर एंड एक सायू। फिशल C6 है, रेजर C6 हो जाएगा अगर आया तो। सायू C4, सायू C6 हो जाएगी अगर आई तो। मेरे को करने हैं एवरी 4 स्टार C6 मेरे। वेल नहीं, ऐसे वेलिंग वाली नहीं। हाँ एक कैम तुम हो वेला, आई नो ब्रो, बार बार मत बताओ मुझे। क्या? दो तो ये रहा पिलर, और कहाँ है? क्या कर रहा है तू? ग्राइंड। अरे मैं देख के ही पूछ रहा हूँ, ये क्या कर रहा है तू अभी? पिलर थे यहाँ पे 2 नहीं मिल रहे मुझे, कहाँ है? हाँ नीचे है वो। कहाँ नीचे? नीचे नहीं है, नीचे कुछ नहीं है। अरे है भाई, उधर जाओ अंदर, पीछे जाओ, पीछे से लेफ्ट जाना, उधर एक छोटा सा कमरा है एक उसके अंदर। अच्छा यहाँ है, एक ही है। हाँ तो एक इसके बिल्कुल मिरर इमेज, मतलब ये लेफ्ट में है तो वो राइट में। इन्वेस्टिगेट करो, 10,000 मोरा मिलता। 20,000 ठीक है, मेरे को 10 दे रहे थे गेम वाले। राइट राइट राइट, हाँ आगे आगे, हाँ आगे से आगे से आगे से, हाँ तो और देख गया, तोड़ो उसको दीवार। कहाँ दिख गया? कहाँ चला गया? दीवार तोड़ भाई वो।
तोड़ सकते इसे। हाँ हाँ वाह, मैं तो बढ़िया चला जाता, क्राउच व्राउच करके आराम से जाता था। पूरा है ना भाई तू? Unsolicited. चू मोटा मतलब चूहा तो कोई और ही था। सर नेवर मोटा तो माइंड। नहीं है, मोटा तो नहीं घुस पाता, पर तू जरूर है। ओ क्ली क्ली भी है स्टोरी में। आगे देख तो जाओ। अच्छा लीक से पक्का नहीं है। स्टिल F2P डेविल इज भाई मैं F2P प्योर F2P बड़ी। क्या यार fuck are you fucking silly इधर। If it's useful, I'll take it. ओहो लग्जरियस चेस्ट। ये एक गेम जो क्वेस्ट कर रहा है वो करो, वो करना है। करता हूँ, रुक जाओ। जल्दी पुल पुल नहीं, पुल नहीं। जल्दी प्लीज, फुल नहीं, प्लीज प्लीज कह रहा, प्लीज। क्या था पुल नहीं, पुल नहीं। Gonna be epic. डेविल भाई तुम मैं कैसे लड़ूंगा तेरे से? मत लड़ मेरे से। अब नील मैं नहीं हूँ गमछा भाई, मतलब मुझे नहीं आती ये लैंग्वेज तुम्हारी। भाई लैंग्वेज प्लीज लिखा है उसने, पढ़ लिया भाई। हाँ देखो क्या लिखा, ILIL। Let me read you a verse. पता है इतना भी नहीं कि आई और यू में फर्क ना पता चले, फिर छोड़ो यार। अरे मुझे लगा तुमने PILLS लिखा है, मुझे दूर से दिखा नहीं वो PILIS लिखा है, गधे। तो नहीं बोला ना कि बम्बा नहीं हूँ, मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती। अरे तो भाई ठीक है यार, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। दिन में सिर्फ जिस टाइम डेविल स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम इसकी लेने में मजा आता। ऐसे कुछ नहीं बोलता मैं उसको पूरे दिन। क्या फनी बात है ये। गंगंगू मैंने तेरी समझ रहा है, समझ रहे हो? रेलिंग करा रहे हो तो पलट गया ये एकदम से।
उसको भी पता है मैं कितने पैसे लेता हूँ उससे। अरे मैं Brace yourself. कितने के बच्चे हैं सारे? Let's play. एक सेकंड मुझे ये कर लेने दो, मैं दिन भर लाइव हूँ नील, वो क्वेस्ट करके जाऊंगा, मुझे बस एक बार ये वाला कर लेने दो, मैं बड़ा उत्सुक हूँ ये करने के लिए, यू नो। हाँ पे कर रहा है ये गंगंगू। आवाज तेरी बहुत वो है, आवाज लैग कर रही है बड़ी। चीज एक लिमिट तक यूज करो, घूल ना बनो। Brace yourself. मैं भाई मैं और घूल घूल से कंपेयर कर दिया। नींद नहीं आनी आज तो। यहाँ हो तुम, इधर आओ। Show my sword. Let's light it up. Yahoo! हेलो। हाँ भाई यार पता नहीं मेरे नेट के साथ दिक्कत हो रही है क्या आज? हाँ आज तुम्हारा नेट दिक्कत कर रहा है। या तो नेट या तो डिस्कॉर्ड। वेंटी आया भाई स्टोरी में। ओ ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। चलो ये बाद में करेंगे। कहाँ है इवेंट डिटेल्स? अंदर लेजेंड ऑफ ये पहला वाला ये खुला है। क्या है इसमें, क्या करवा रहे हैं ये लोग हमसे? स्टोरी अच्छी है, करो। हेलो AKM। हेलो मी एज AKM, बोलो क्या है? तो निकाल लूंगा यार, तो करता हूँ 10 नहीं है सॉरी। कितनी हो गई फ्रेंडशिप? 9 एक के साथ हो गई। टू क्लोज 3 चॉकलेट। किली मैंने यूज तो किया, बहुत ज्यादा यूज किया किली बड़ी, क्योंकि 10 है मेरा उसका वो। Hi, Catherine. We heard that you have a new commission for us. 2-3 हफ्ते में हो जाता है ये। भाई क्वेस्ट That's गानू का correct. 10 हो गया। There's a requester who has submitted a designated commission for the two of you. A designated commission? Sounds like it must be pretty important. What kind of task is it exactly? There's no need to worry. This commission is not dangerous by any means. Perhaps you have heard that Inazuma will soon be holding a major festival, मैंने ऐसी the बात Magnificent करी Irodori की साइड Festival. लिया मैंने, उसका रिप्लाई नहीं दिया बंदे ने अभी तक। भाई बड़े लोग हैं ऐसे करते हैं, पहले सपने दिखाते हैं फिर चूतिया काट देते Come हैं। to think of it, we haven't attended a festival in Inazuma for a while. अरे यार मजाक कर रहा हूँ। यार ये कैसे मजाक, मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहे। The Yashiro Commission and Lady Ai are responsible No, for all the festival you is preparations. devil भी भैया is। The one who has requested your help is none other than Lady अच्छा Ai you is herself. devil, अभी भैया is AKM। I know buddy।
It's Miko's commission. You know Miko. She always has some तुम unusual बोल रहे हो ideas क्या in पढ़ना her है मुझे? head. You can bet a festival planned by her is gonna be one to remember. We better go to Grand Narukami Shrine and see what she needs us to do. Lady Yae is currently at Yae Publishing House in Hanamizaka, so there is no need to go all the way to the shrine. In fact, she has instructed me to have you directly meet with her there. Oh, well that's convenient enough. Let's go then. अभी पता चला 1 मिनट पीछे देखा था। नील कौन से नशे कर रहा है वैसे? हैं? क्या हो गया? इसकी चैट पढ़ रहा गधे और सोच रहा कि काश भगवान दिमाग देता। यस बडी। बिम तो के ये क्या होता है? क्या भाई 2 बातें की, क्वेस्ट कंप्लीट, 40 फ्री मुझे मिले। दो दो The damned will sooner die again than lay a hand on me. आज मैं पनीर की कोई डिश बनाऊंगा। ये इवेंट करने के बाद चलूंगा मैं। How are things coming along? All the books and commission कुछ prints बनाने for का मन Yae कर रहा है, Publishing House बनाऊंगा were पनीर bound का and कुछ। sent out yesterday afternoon, Lady Yae. Very good. And Murata? We have already received word from Apekusu and Sailing Breeze that the materials are all in place for Shogun Almighty Reborn as Raiden with Unlimited Power and Pretty Please Kitsune Guji. गुजरात में सोडा और थम्स अप को मिक्स करके भाई ये मतलब Well done. सोडा मिला के about कई you, ड्रिंक्स बनती हैं, Onodera? वो कोई नई चीज़ थोड़ी है। तुम्हारा गुजरात विदेश में नहीं है, ठीक है? कहीं है। काम करना, थम्स अप में वेनिला आइसक्रीम डाल Onodera? Oh, yes, Lady I. Everything's ready for the new issue release party. कैसा लगता है वो गेम वैसे? You are the one who organized the plans for this release party. In other words, you are the team's fearless leader now. So please, show some confidence. Besides, there's no need to be nervous. This project is destined for success. I feel quite optimistic about it. I shall specially grant you leave for the next couple of days, Onodera. Please take the opportunity to have a good rest. After all, you will be very busy on the day of the release party. यू वेनिला और थम्स अप। हाँ, मैकडी पे उसी को टेस्टी टेस्ट बोलोगे। Yes, Lady I. Thank you very much. मैकडी वाले वही देते हैं ना? All right then. Is everyone clear about their assignments? Good. We are running out of time, so let's get moving. Chop chop. मैकडी उसको कहते हैं सॉफ्ट सर्व। भाई हेल्प कर दोगे? कर देंगे ना भाई। किस चीज़ में हेल्प चाहिए बताओ? Hello, little ones. बॉस I फाइट take में it you have received my commission. भाई यूआईडी लिखो 82829592। अबे साले क्या? लिखो भाई यूआईडी ये लिखो। अरे तू क्वेस्ट करना। You'll be getting back to the Grand Narukami Shrine. You weren't thinking of dumping all the festival preparations on us, were you? ब्रो If इस so, यूआईडी then पे you can जरा रिक्वेस्ट भेजो। such a मदद आ रही है। My, such harsh words. It hurts to hear that kind of तूने talk नंबर from याद you कर लिया two. क्या अपना? But as you can clearly see, I'm here working like a dog for the festival. Yet you say I'm not doing my job. Let me ask you, little ones, whoever said that the festival must involve the Grand Narukami Shrine? Huh? But isn't that a given? This is Inazuma after all. Yes, that is true. No, But now the Sakoku decree has been lifted. Inazuma is no longer the same. Therefore, rather than sticking to the same old traditional festival, the Yashiro Commission and I have decided to shake things up a little. This time we'll be holding an I suppose I should start by telling you the origins of the Iridori festival.
तेरा नेट लैग कर रहा है. Legend has it that there were 5 poets in ancient Inazuma who were supremely gifted in singing and writing poetry. They are known as the 5 Kasen. Every year, one of the 5 would present a collection of the group's poems to the shogun for review, which would then spark culture discussions regarding those works. Thanks to them, Inazuma's culture blossomed and gained great influence at that time. As time passed, people began creating various tales based on the 5 Kasen. The Iridori Festival was also developed as a result to show appreciation for their works, which so greatly enriched our lives. Sounds like a festival that's really rooted in culture. Indeed. To describe it in the words of the ancients, it'd be refined elegance. Unfortunately, with the flow of time, people have gradually forgotten about the 5 Kasen and the festival, which is precisely why I've decided to revive the Iridori Festival by holding a cultural convention featuring light novels. But wait a minute! Light novels? Please stop looking at me with those baffled expressions. In ancient times, poetry was all the rage, but nowadays the entertainment format of choice is light novels. The important thing is not the format, but the creative work itself. It is impossible to come up with anything fresh if you're stuck using some rigid format of the past. चलेगा उसके वर्ल्ड में. Speaking of which, don't you think that the concept of focusing on कर लो भाई the map request accept perfectly मदद कर suits the देगा वो. current Inazuma? And besides, it's a great opportunity to reintroduce Inazuma to Ultivat through light novels. As they say, it's 2 birds with 1 stone. Whoa, that was close. Paimon was nearly carried away by Miko's persuasive tongue. Come on, Miko! You can't fool us. We know you by now. This is all definitely stemming from your own personal interests. I can't deny that my hobbies had no part to play in this. However, regardless of whether it's light novels or a festival, catching people's attention with a fresh concept is the essence here. Well, what do you say? Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? Maybe a little. Oh, alright, I'm super curious now. Come, let's pay a visit to the venue in Rito together. I promise that it will give you a whole new perspective on the festival. There we'll meet a special someone who will tell you more about your tasks. Special someone? हाँ. कौन स्पेशल समवन? देखने जा रहा हूँ मैं. कोई भी नहीं है स्पेशल समवन. एल्विडोर. During the Iridori Festival, the area around the Outlander Affairs Agency will become the main exhibition space for light novels. Once things are in full swing, not only will there be lots of official and fan-created work hello on bro, display, welcome to the stream. there will also be exclusive giveaways, prizes, and new release parties. This small plaza in front of the International Trade Association will be called the 5 Kasen Plaza during the festival, and nearby shops will be selling special light novel merchandise. You Wow. How should Paimon put this? It's definitely not But your it's always typical like a quite festival, party, but yeah. it's- Oh my god. Miko, what are these Neil here big between. boards in Wow. the center of the plaza? नील ने नाम बदल दिया अपना. Yes, those are... Ah, Lady I did mention that there would be some reliable helpers coming to assist with the festivities. It appears she meant you two. At last we meet again, Traveler and Paimon. Tell me, how are you faring recently? तो बंदा आया था उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी पर उसने एक्सेप्ट नहीं So even a busy guy like yourself is here to attend the Ayaka build. दिखाता हूँ रुको. Preparing festivals falls under the Yashiro Commission's scope of responsibilities. Seeing as Lady Ai has poured her heart and soul into the preparations, I'm obliged to be equally dedicated. Come now, Ayato. We're not strangers here. There's no need to sound so formal. We were just about to discuss the boards over here.
They're related to our little helper's tasks, so I'll let you give them a detailed rundown. Certainly. I assume you two already know that the Iridori Festival originated from the 5 Kasen. These 5 boards are here for painting their portraits. This Iridori Festival is not only the first major festival to be held in Inazuma since the lifting of the Sakoku Decree, it is also an event deeply rooted in culture and the arts. Therefore, the Yashiro Commission has personally invited several cultural celebrities from other nations. अलग-अलग नेशन से ने celebrities बुलाए हैं. For example, the artist we have invited to paint these portraits hails from the distant land of Mondstadt. The Yashiro Commission will arrange accommodations and food in Inazuma for each of the distinguished guests. However, we fear that staying in a foreign land may feel a little uncomfortable, which is precisely why it would be ideal to have someone familiar with both Inazuma and other nations of Teyvat to serve as a guide for our guests. I knew you would catch on. It is our hope that you would be able to guide the guests from the harbor to their residence at the International Trade Association, while providing any necessary assistance along the way. This arrival schedule includes the details of the ships on which the guests will be arriving. All you simply have to do is go to the docks at the indicated times. Okay. It's settled then. My, look at the time. I have to meet with my editors. During the festival, most of the Yai Publishing House's editors will be staying near the Outlander Affairs Agency. If you run into any problems, you may find them there. This festival requires the full cooperation of the Tri-Commission, and there are still many minor details which require my attention, so I must excuse myself for now. I'll leave the... All the details we need about the ships are on the timetable that I had. Ayaka build देखना था तुम्हें. Ayaka का build 2200 अटैक है और 41,190 crit rate का डैमेज है. 61 cryo damage. 2 piece Glad, 2 piece Blizzard Slayer. 4 piece बन मतलब अच्छा नहीं बन रहा तो 4 piece नहीं लगाया मैंने अभी. Wait for 6 to 8 PM और जाना कहाँ अपन को यहीं जाना है डॉक्स पे. आर्टिफैक्ट्स रुको. आर्टिफैक्ट से स्टार्ट करें तो फ्लावर. ये सिस्टम साउंड का कुछ ग्लिच आ रहा है गैस. क्या ग्लिच आ रहा बताओ मुझे. ये फेदर है. ये अपना सेंट्स हो गया. ये गॉबलेट और सर्कलेट. गॉबलेट और सर्कलेट में नो क्रिट नो कुछ भी नहीं है. डबल साउंड अब नहीं आएगा. पहले क्यों नहीं बताया मुझे. वेपन कौन सा. नो वेपन है ये. आ रही थी पहले तो बताया क्यों नहीं मुझे. मेरे पास वो वेपन पड़ा है मैंने अपग्रेड नहीं किया. 20 लेवल पे ही है. पहले मैं सोच रहा था मेरे फिर खराब है साले. नील सा क्या गधे हो तुम. The artist for the 5 Kasen portraits should be on board. The boat should be arriving soon, so let's head down to the docks. पहले क्रिट डैमेज इज लो देन. हाँ पता है क्रिट डैमेज लो है. कर तो रहा हूँ धीरे धीरे आर्टिफैक्ट ग्राइंड बट मिल नहीं रहा है मुझे इस हिसाब से लगाने के लिए. Hello, you must be here to take part in the Iridori Festival. We're the festival guides, and we'll show you around. Yes, that's right. We are bards from Mondstadt. Word has it that Inazuma has undergone many changes of late. We hope to find fresh inspiration here. अबे 12-1 They're all bards, aren't they? पिछला वाला 12-3 था. 2-3 2 स्टार और इस बार का 12-1 ही 12-1 तक ही किया है अभी मैंने. बाकी किया नहीं. वो 3 स्टार है. Strange. He's pretty famous in Mondstadt. Do you think he didn't receive an invitation? Huh?
what you're getting at. Even though Vendi no longer rules over Mondstadt, he's still an Archon. If he came rushing to Inazuma at the first mention of a festival, not only would it seem a little childish, it would also sort of be Kili build करनी है यार. Mr. Honorary Knight, Paimon! पिद्दी भाई देख ही नहीं पा रही वो. It's Klee! Were you also invited to the Iridori festival? No, Albedo's the one who received the invitation. But because everyone in the Knights of Favonius has been really busy these days, Albedo arranged for someone here to issue me a dependent pass. Greetings, Traveler and Paimon. After hearing that Inazuma was making preparations for the Irodori festival, I predicted that I might run into you here. Ha! Paimon knew it! Albedo's the one they've invited to paint the 5 Kasen! It seems that you already know why I'm here. Just so you're aware, I'll be using my pen name in Inazuma, Calx. Oh, by the way, do you know where the International Trade Association is? I'll be meeting with the editorial director of the Yae Publishing House there. Yeah, the International Trade Association is where you'll be staying in Inazuma. We'll be heading there too. Great. ये अनित गेमिंग एंड टेक का अकाउंट देखिए एक बारी. क्यों? तुमने देखा है? मेरा व्यूअर है बोलता रहा हूँ. अच्छा. अच्छा है अकाउंट. देखो सही. भेजिए अकाउंट. देखें क्या सीन है. कुछ ज्यादा ओपी है क्या? कौन है? M4AK. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये वाला या वो वाला. मतलब दो अकाउंट उस दिन साथ साथ. Never seen before. मेरे को भी थोड़ी गलती लगी. Slow down, Klee. Please be careful not to bump into others. Telling Klee so many stories about Inazuma during the trip was probably not the best idea. As a result, she could hardly sleep all the way here. It appears she's even more excited now that we've arrived. Strange. It seems that the editorial director, Mr. Hiroyama, isn't here yet. I'm certain he said that he'd be sure to arrive before me. This might be a problem. Well, Mr. Hiroyama was supposed to meet with me and give me some reference materials about the 5 Kasen today. That way, I could better visualize the content for my paintings. You mean you had no idea what you'd be painting before you arrived in Inazuma? I only know of the 5 Kasen by name. Because of the sheer age of the tale, very little has been passed down to this day. So Mr. Hiroyama decided to help me collect some more information. I'm the type of painter who can complete a painting quickly as long as I'm inspired. So I agreed on only receiving the details today. So when do the paintings have to be done by? According to the festival plans, the portraits will be revealed one at a time throughout the various stages of the Irodori festival. The first one, depicting Suiko, will need to be done before the festival's official opening ceremony. The day after tomorrow? Then you're already running— There's no need to panic. When I was working on light novel illustrations, because the manuscripts are shipped by boat just last month, to ensure the latest book of A Legend of Sword would be finished for the Irodori festival, I had to complete the final chapter's illustrations the same day I received them. I heard that my illustrations were sent to print as soon as they arrived in Inazuma. Paimon isn't sure if she should feel sympathetic for your working conditions or compliment मेरा UID हाँ देखता हूँ एक second. Of course, I would still prefer to receive any possible reference materials in advance, so that I can be better prepared. Oh, right! The editors of the Yae Publishing House will all be around the Outlander Affairs Agency these next few days. Who knows? Maybe Mr. Hirayama's over there too. We'll take you over there to see if we can find him, Albedo. Alright, it's worth a try. Klee, you haven't slept for a while now. Please stay at our residence in the International Trade Association and get some rest. We will be back soon. Okie dokie. Don't worry, Albedo. I'll be on my best behavior. भाई क्ली का वॉइस एक्ट्रेस कौन है? क्या? देख लो तुम्हारे पास है तो क्ली. अच्छा हाँ. मेरे को लग रहा है अभी क्ली का रीरन आएगा. नहीं आएगा.
3 हो गए उसके रीजन। 3 थोड़े ना हुए, 2 हुए। 2 हुए। तीसरा आयाटो है बंदे के पास 2000 66 228 और इस पे अयाका का वेपन है। सही है भाई। ग्लैड, अच्छा फुल ग्लैड लगाया तुमने। ग्लैडिएटर सही रहता है भाई, मैंने देखा है क्लेमोर और उनके लिए। मेरा फुल लाइनअप शोकेस। अच्छा ये तुम्हारा लाइनअप है फ्लोर 12 का। अयाटो, जिंगशू, फिशल और जोंगली। दूसरा है गान्यू, काजुआ, बेनेट और डायोना। नाइस। बट इसमें हीलर क्यों नहीं है फिर? तो वो भाई गान्यू का बेल्ट है 61 232 हैं। आर्टिफैक्ट सेट कौन सा है? स्काईवर्ड हार्प और आर्टिफैक्ट 4 पीस वॉन्डरर ही है। नहीं, स्काईवर्ड आर्प के साथ हो सकता है, एमोस बो के साथ नहीं हो सकता ये। हाँ एमोस वो है तेरे पास। C1 है तेरे पास भी, C1 ही है। रिंगसू C6 नाइस। रिंगसू का बिल्ड देखना है मुझे। 1500 है 54 162 विच वेपन ब्रो। एनर्जी रिचार्ज। भाई कहाँ से आ रहे हैं इतने अच्छे आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास जो मुझे क्यों नहीं मिलते यार? तुमने शोगन पे लगाए हुए। तुमने शोगन तो मेरी वो ओवर किल है। ये वो बिल्ड है मतलब जो मैं बता रहा था ना कि अटैक का मेरे को भी लगाना है। 200 मेरे 250 एनर्जी रिचार्ज है जिंक्सू में भी 200 कर लूँगा, उसको बदल दूंगा। वो फिशल बिल्ड की 50 140 ये भी एम्बलम पे होगी। हाँ समझ गया था मैं। एम्बलम ओपी चल रहा है अभी। एलजी फॉर द एंड। नाइस। C6 ओके। जोंगली पे वेपन है फबोनियस लेंस। 1100 अटैक, 41 112 150 रेंज, 44,000 HP। भाई सब HP मतलब तुम्हारा। किसकी? जोंगली कॉन्स्टलेशन 0। कॉन्स्टलेशन किसी की नहीं है मतलब अकेले गानी हूँ। कहा जुहा निकालना है मुझे क्योंकि मेरे पास वेपन है इसका सिग्नेचर। 3071 एलिमेंट मास्टरी कितनी है? 900 एलिमेंट मास्टरी भाई साहब। मेरी जू क्रॉस पे होगी 700 समथिंग। मेरी भी वो एंटी पे 780 तो। नाइस बिल्ड। एक इसका 240 Benny's adventure team, assemble! फिजिकल डैमेज पे वो क्या होगा? सब यही देते इस पे। 4 पीस नोबलेस प्रोटोटाइप रैंक और ट्रेड क्यों दिया? हीलिंग बोनस क्यों नहीं दिया? बहुत कम लोग हीलिंग बोनस का पता लोगों को। भाई हीलिंग बोनस दो भाई। अनडायबल अल्ट ब्रो बैनेट पे कोई जरूरत नहीं उसको क्रिट रेट की। बेनेट ऑन फील्ड रहता ही इसीलिए तो 2 पीस 1080 2 पीस नोबलेस। हीलिंग बोनस नहीं मिला। अबे नोबलेस के तो मिल जाते हैं भाई, कई पड़े हैं मेरे पास तो। मेरा बैनेट हील का था 6600। 2 सेकंड में 2 बंदे हील, 3 सेकंड में। HP भाई डायना की शील्ड भी अच्छी होगी तुम्हारी तो। मैंने बेनेट फार्म करके रखा हुआ था, मेरे पास मोरा नहीं था, मुझे याद आया। लॉल ट्यूसडे फ्राइडे Reduced to just standing around. मेरे कौन सी कैरेक्टर अच्छे बिल्ड है मुझे तो पता भी नहीं है। मतलब पता तो है। काफी बढ़िया बात बोली। वो ना क्यों है कैरेक्टर शोकेस पे जोंगली रखो ठीक है, बैनेट रख दो और इसको हटाओ इसको रखो ठीक है। क्या हो गया? स्पाइरल 12-1 मेरा? हाँ क्यों? मैंने किया ही नहीं ना पिंक की वजह से। हो कहाँ रहा है? डैमेज ही रजिस्टर नहीं हो रहा मेरा। फोन के नेट पे कर लेना। रात को करेंगे वो अपन फोन के नेट पे। अब अभी तो कर रहा।
शोगन क्या लिंग ठीक है बने रंडू योइमी आ गई। जाओ बिल्ड बढ़िया है मेरा। क्रिट डैमेज कम है, क्रिट रेट मोर देन एनफ है, लाइक 80। मेरे 5 स्पाइरल अब 60-30 स्टार ग्लो है। मोबाइल प्लेयर हूँ। वाह भाई नाइस। ये वाला स्पाइरल नहीं हो रहा है यार, काजुआ नहीं है ना वेंटी है। इस स्पाइरल के लिए काजुआ या वेंटी चाहिए। This can't be happening. The moment we need to contact Onodera is when he's on special leave. Kuroda and I will go back to Inazuma City for an emergency printing run. The demand for this book is so high, though. Even with the emergency prints, it still might not be enough. Despite everything, we're still lucky that we found out today. If this had happened a few days later, then we'd really be in boiling water. Hey, do you think that suspicious guy they found in the warehouse has anything to do with this? क्या हो? पाइमॉन इस गेम का फाइनल बॉस होए। मजा आ जाएगा। The editorial director इतना is मारूंगा ना उसको मैं। to investigate the situation as we speak. साला जब लड़ाई होती भाग जाता है। Oh, hey traveler. Don't worry. It's nothing, just an internal issue. That's all. I'm looking for the editorial director, Mr. Hirayama. Does anyone know where he is now? Mr. Hirayama is currently at the warehouse down by the harbor. Oh, hold on a second, Murata. वैसे क्ली और योइमिया एक साथ, इनको छोड़ना तो नहीं चाहिए। Excuse me, but you must be Calx. पाइमॉन को खाना दे दूंगा एंड आई वॉन। ये भी है। Yes, that's me. My name is Kuroda. You must be inquiring about information regarding the 5 Kasen. I do apologize, but please make yourself comfortable at the International Trade Association, and I will let Mr. Hirayama know to send you the materials right away. Oh, no need. You guys look super busy, so we can go find them ourselves. Excuse me, but is... Huh? Since you were all aware that Mr. Hirayama needed to send me some supporting materials, that means the editorial director didn't forget about it. Instead, something urgent must have to add to that. Despite being aware that I am Calx, you were still unwilling to let me go to Mr. Hirayama directly. After considering these factors, the only reason you would try to stall me is if something happened to A Legend of Sword, which I did the illustrations for. Well, I'm very sorry. The situation is just as you said, Calx. I suppose it doesn't hurt to tell you now. Earlier today, someone spotted a suspicious outlander sneaking around inside the Iridori Festival warehouse down by the docks. So they promptly alerted the Tenryo Commission. The Tenryo Commission was concerned about potential cargo theft, so they contacted everyone who's renting space in the warehouse. It was then that we realized that the latest copies of A Legend of Sword had suddenly gone missing. What? The books are missing? Not so loud. हाँ बहुत ज़्यादा. Not only is this book an eagerly anticipated release in the last phase of the Iridori Festival, but the author, Chin-Yu, will be personally attending the release party as well. Because of the dire situation, Mr. Hirayama immediately hurried to the warehouse to determine whether the theft was related to that suspicious outlander. और वो लाइक सगे भाई बहन नहीं है। हेलो, जब स्टोरी हुई थी तो उन्होंने तब बताया था कि लाइक वो एलिस है ना क्ली की मम्मी, उसने अल्बोइडो का ध्यान रखा था बचपन से, इसीलिए वो मतलब लाइक बुलेट रिलेटेड नहीं है। Then I'll go down to see if I can be of any help. So the author of A Legend of Sword is Jayu. Sounds familiar. Hey, isn't that Xingqiu's pen name? Oh, do you know him? Xingqiu would definitely be upset if he discovers his books are missing. Let's accompany Albedo to... यार ये स्टोरी लाइन वाले मिशन बहुत बोरिंग लगते हैं मुझे, काइंड ऑफ। मेरा ओ वेंटी कुछ सारा हेलो है क्या वेंटी?
हेलो एकम It's you! Why are you here? I'm here on behalf of the Tenryou Commission, of course. Is that surprising? No, Sarah, Paimon wasn't talking about you! So, Tone Deaf Bard. The suspicious outlander in the warehouse wouldn't happen to be you. Considering the evidence, it appears that the suspicious outlander is indeed me. As I have told you, you are a suspect. Before your allegations of theft and illegal entry as a stowaway are cleared, you are to remain silent. Don't, Traveler, Paimon, do you know this self-proclaimed bard from Mondstadt? Listen, Sarah. Knowing him, it's safe to say that he wasn't behind the theft. But what's this about being a stowaway? Although he claims to be a special guest for the Iridori Festival, he's failed to present his invitation letter. Therefore, we can only suspect that he might have entered the country illegally. And just a moment ago, we caught him in a dandelion wine crate near the Sailing Breeze. If it would help shed any light on the situation, then please, be my guest. Oh, Venti! You didn't really come here illegally, did you? Ouch! Your words wound me. We've been apart for so long, and the moment we meet again, all I'm greeted with is grilling questions and suspicious glares. You arrived in Inazuma via similar means, or so I heard. You of all people should be more understanding, don't you think? Similar means? I merely jest. Fear not, for the person who sent me the invitation is none other than Kamisato Ayato of Yashiro Commission. It's unlikely that someone acquainted with the likes of him would ever be here illegally, right? But why weren't you on the same ship as the other bards? Well, once I received the invitation letter, I couldn't help but want to come to Inazuma a little early. It was then that I happened upon a cargo ship bound for Inazuma transporting dandelion wine. So, naturally, I decided to set sail with them. Once aboard, I found the captain to be a kindred spirit, and I was treated to an abundance of fine liquor along the way. I must have fallen asleep in the cargo crate while carefully comparing the tastes of dandelion wine and Inazuman sake. And when I woke up, I found myself in this warehouse with a Tenryou Commission general glaring at me from atop the grate. Coming from Venti, this story is quite believable, but Excuse me, Piakkar. I'm the owner of the stolen goods from the IA Publishing House, and there are some questions I would like to ask. Based on what you just said, it seems you've been in the warehouse for some time now. If that's the case, did you happen to hear anything unusual? Actually, I did hear some faint footsteps around me a couple of times, but I didn't consider the sound anything out of the ordinary. But if you clearly heard something, why didn't you feel it was unusual? Oh, I seem to understand now. Huh? What did you notice, Albedo? When it comes to burglars, they are generally associated with prying or rummaging through things. What Venti means is that he did not hear anything unusual like that. As for the sound of footsteps, because this is a warehouse where many goods are coming in and out each day, it is quite normal for people to be walking around. I see. But if that's the case, then we're back to square one regarding the stolen books. No, not quite. From the facts that have been presented to us, we can draw at least 3 conclusions now. First, whoever took the novels is not a spur-of-the-moment burglar. They had their sights on the books from the very beginning. Second, the culprit was very familiar with the warehouse, and might even have a key. I knew you'd catch on, Traveler. One person couldn't possibly transport so many heavy books in such a short window of time. It must have been a team effort. It goes without saying that Venti clearly does not match up with our culprits. Yes, I agree with your reasoning. Mr. Hirayama, the Tenryou Commission will continue by investigating the warehouse. Yes, understood. I'll... भाई एक फेस्टिवल है डेवलप भी आएगा free as a उसका bird नाम है then. इरोडोरी Not so fast. Yeah? Even though we've cleared the theft Festival है ना इधर एक allegations, हो रहा है we still Inazuma haven't में, इसका नाम है ascertained whether your इरोडोरी arrival in फेस्टिवल Inazuma was legal उसको or तब से not. इंदोरी फेस्टिवल अरे मैं भी वही पढ़ रहा था पहली बार इंदौरी Tis a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sarah's quite the meticulous one. इंदोरी फेस्टिवल Where's your invitation?
invitation letter, Venti? Yes, the invitation letter. I'm truly... Don't be mistaken. I was well aware of how important it was. But I didn't bring any luggage with me, and the letter was too big to fit in my pocket. So strange. Though I had a little too much to drink, If you were holding the invitation in your hand the whole time... Well, to properly compare the taste of Mondstadt wine and Inazuman's, I couldn't both hold the invitation and a glass at the same time. But surely I wouldn't... In which case, I believe there's only one place it could be. Huh? You're way ahead of Paimon. Ah, yes! I remember now. I knew you'd help me find it. This is indeed an invitation letter issued by the Yashi. However, starting tonight, I would advise you to stay at the International Trade Association. Now, if you'll excuse me, I'll be... There goes Sara. All right, let's go talk to Mr. Hirayama about Albedo's reference materials. Mr. Hiroyama, I'm Calx. We had originally arranged to meet today. Ah, yes, so you are Calx. I'm very sorry that you've arrived in Inazuma only to find such a mess. These are the materials regarding the 5 Kasen. Oh. Let's see here. Yes, it's just as I had suspected. Monikers such as Suiko and Aoi no Okina. Though there were once many stories regarding each of the 5 Kasen, the validity of their contents can no longer be verified in present times. But, at the very least, we know that most of the stories were written according to a similar style. So there is still something we may glean from this. So, is the info useful for your paintings, Albedo? To some extent, yes. However, I must admit that it is still lacking, and... I am sorry that this information is not as exhaustive as you had hoped. However, it is not possible to gather anything more at the moment. Though, Lady Yae did say that there are many variations of the story about the 5 Kasen, and everyone has a different story in their heart. So all you need to do is follow through with what's in your own heart, and create something that you yourself find interesting. That does sound like something Miko would say. Thank you, Mr. Hiroyama. No need to worry. I'll find inspiration for the portraits. Great. I'll leave it to you then, Calx. Oh, and there's one more thing I need. Tomorrow morning, Mr. Genyu, the author of A Legend of Sword, will be arriving in Inazuma by boat. If you see him, please do not... Whether the stolen books are eventually recovered or not, the Ayaka Publishing House will do its best to ensure that the novel's release is a success. You have my gratitude. Well, seems there's nothing more we can do here. Let's... Huh? Betty? What are you... Traveler, Albedo, would you mind coming over here for a moment? What is it, Venti? Piece of paper. Indeed. When I awakened to find myself in the warehouse this morning, I discovered this paper in the cargo crate where I was sleeping. I didn't think much of it then. I thought it was merely a scrap piece of paper that had fallen into the cargo. After a quick glance, I stuffed it into a place nearby. But on second thought, I think it's worth having you take a look at... अभी क्या करना गेम में? Let me see. तेरे को कुछ ग्राइंड तो नहीं करना है? क्यों? तो नहीं मारना कोई? Wait a minute. Isn't Suiko the name of one of the 5 Kasen? इवेंट तो हो जाए बेंच कितना बड़ा करा रहे हैं 40 प्रीमियम्स के लिए roughly boils down to Suiko getting tipsy and letting some poems that were meant for the Shogun get stolen. Ah, this story sounds familiar to my ear. What, seriously? It's literally the same story you just Oh. Yes, I concur. The person who left this paper could quite possibly be the criminal, or even a witness to the theft. But why leave the paper here in such a fashion? And if the one who left it here was... All right, let's not get... Meeting together in Inazuma like this is a most rare occasion. Since we've been busy... Hey! You just sobered up and you're already... and let's not forget that Albedo still has a portrait to complete. No, it's fine. Let's all go for a drink together. Wait a minute! What about your As I mentioned before,
I'm the kind of artist who can work quickly once I'm in. If I use a model as reference for the piece, we must pay him back. In that case, we'll... One year, the poet Suiko made his way to Tenshu इवेंट अभी तक and ठीक से presented स्टार्ट the नहीं हुआ Kasen's है work for the कल शायद Shogun's थिएटर perusal. मैकेनिक्स चालू But a हुआ page अच्छा from the works of Aoi no Okina had been torn out, and Suiko was questioned regarding the matter. Suiko pleaded guilty. He admitted to drinking at the tavern the night before, and vaguely recalled a mysterious figure approaching while he was intoxicated. Wow, you really came through, Albedo. You were able to complete the first portrait before the opening ceremony. Yes, it really is a sight to behold. Not only does it harken to the traditional style of Inazuma, but it also makes use of modern aesthetics. My figure is particularly striking. Even though I'm sound asleep in the portrait, I still appear as glorious as always. Hey, don't get too full of yourself, Tone Deaf Bard. Tone Deaf You were Bard. just a model. The person in the artwork isn't actually you. Well, Albedo, who will be your next portrait? The next one will be Aoi no Okina of the 5 Kasen. Albedo, might I suggest waiting a little before starting on the next one? Who knows? Another story. I believe he's referring to the possibility of finding another paper with tales of the 5 Kasen. According to the reference materials I was given, we've only found the first of a total of 4 chapters. Do you think the mysterious person who left the first paper will It certainly is a possibility. Also, there are some points regarding the stories of the 5 Kasen that have left me rather curious. For example, the reference materials make mention of 5 legendary figures, yet all the popular stories only consist of 4 parts. It appears that throughout all the stories, there is never a chapter dedicated to Kuronushi. Yes, I'm also curious about these stories myself. But who knows? They may merely be akin to the old saying in Mondstadt. Seeds of stories brought by the wind and cultivated by time. So for now, we need but just wait patiently. हो गया स्टार्ट stolen by the rightful owner ये कहाँ का क्या क्या चालू हो गया यार ये स्टोरी वाले क्वेस्ट पता है इकट्ठे इसीलिए करना अच्छे लगते कि इकट्ठी स्टोरी देखने को मिल जाती और क्या ही है What a coincidence. I was wondering where I might be able to find you, and here you are. Yes, indeed. I believe Klee has missed you tremendously. Alright, as much as I'd like to sit and chat with you, this time I'm here before bringing Klee here, I told her many stories. However, I've got other things to do in Inazuma this time, besides painting the portraits of the 5 Kasen. Inazuma is not like Mondstadt. I can't just let Klee wander off by herself when I'm busy with other things. She hasn't complained, but I can fortunately... Yay, Mr. Honorary Knights here! Mr. Honorary Knights. What you talking about, Mr. Honorary Knight? Are we gonna go play? Yeah. But Albedo is really busy. I can't go too far away or... Aw, Klee, you're such... Paimon's very thoughtful, thank you very much. Paimon always thinks of you whenever she's eating a delicious slime. Yeah, that's smart anyway. It is pretty cruel not to let Klee go out when she was so excited to come here. Yep. Allow the almighty traveler and dependable Paimon to bring Klee on a tour of Inazuma. Klee? Do you want to go play? Yes, you bet I do. As you know, Klee is our Spark Knight. By which I mean,
For instance, Heracles if are a Spark mountain Knight. in Inazuma was to lose one of its peaks, or if there were an explosion somewhere in the city, glad to hear it. I promise I'll bring you back an awesome souvenir, Mr. Great. There are loads of cool things to do in Inazuma. Try the local cuisine. किससे मिलवा रहे हैं आपके लिए के साथ ही? कौन बोला थिएटर मैकेनिक्स चालू हो गया? थिएटर मैकेनिक्स कहाँ बोला मैंने चालू हो गया? थिएटर मैकेनिक्स चालू नहीं हुआ, इवेंट हो गया चालू. To a local restaurant. A restaurant? Yay! Wow, something smells so good. Mr. Honorary Knight, look at this. It's not noodly soup. It's tonkotsu. Oh, so, You're kidding, right? Those are... and what about this little... That's an egg roll. They're amazing. Have you really not tried one before? Wow, tonkotsu ramen, अच्छा. tri-flavored skewers, and egg होता तो rolls. चाह रहा है इवेंट. अब एक दिन में तो गेम भी लाता कोई इवेंट भाई. गेम तो धीरे-धीरे लाता है. They sure are. Guess you're not from around here if you haven't tried any of these. Let me buy you an egg roll with my allowance so you can get a taste of our Inazuman food. 52,000 की अल्ट करता है मेरा चाइल्ड. Master Jean said I shouldn't go taking other people's things. Also, that's your allowance, right? Taking another kid's allowance just seems kind of wrong. Oh, I remember you. You're Yoimiya's friend. How come you know how to make... Egg rolls are a piece of cake for this guy. Why don't you make some for Klee and Iwao? Really? What? All right, we'll be waiting. एग रोल बनाओ इनके लिए यार. रेसिपी है मेरे पास एग रोल की. हाँ. कितने स्टार है? अरे 1 या 2 स्टार है सबसे ऊपर. सबसे ऊपर सेकंड लाइन में आता. वो रहा. भाई क्ली के लिए एग रोल नहीं बना सकता यार, तू कैसा आदमी है? बनाता हूँ भाई. शर्म कर. चुप. बेचारी छोटी सी बच्ची के लिए एग रोल नहीं बना सकता. हाँ नहीं तो. झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, धूल साफ करो. एग रोल बनाओ. बना के तो खिला ही सकता है ना. झाड़ू पोछा थोड़े ना बोल रही, वो कह रही बना के. इतना बताओ कि उसका कजन कहाँ है जिसके लिए वो आया है यहाँ. वो नहीं बताएंगे ये. Who is Yoimiya? She makes egg rolls too? Yoimiya can do anything. She tells stories, keeps goldfish, makes fireworks, and gives us candy too. Yoimiya's pretty much the best and most awesome person ever. For me, the best, most awesome person in the world is my mom. And Klee knows loads of other great people too, like Mr. Albedo, Mr. Honorary Knight, Master Jean. Surely she's not going to name everyone she knows. Oh, well, I don't know any of those people. But anyways, I still want to introduce you to Yoimiya. If you want, in most festivals, Yoimiya's so busy that you can never find her. But this festival's different. She has free time. She seems like she hasn't been in a great mood recently. But maybe... Okay, let's go play with Yoimiya. Boring. Yoimiya. Yoimiya, don't be sad. Oh, I know. Look, yesterday, I won 3 beetle fights in a row against that guy with the horns on his head. Wow, Matsuzaka. Nice work. It's not easy to beat Ito. Don't worry, Yoimiya. Maybe you can't light fireworks during the Iridori Festival, but there are still lots of other fun things to do. I know. Thanks, you guys.
It's just that fireworks are banned in the city for a few days. I'm not that upset, really. Yoimiya, it's me! I want to introduce you to a new friend, an Outlander girl. I just met her. Klee! Nice to meet you, Klee. I'm Yoimiya, and I run Nagana. Hello. I love the cute outfit, with the hat and the cool little symbols. So unique. And your backpack, wow, it's really well made. That's a 4-leaf clover. Mom and Master Jean said it can bring me good luck. Really? That's awesome! I bet everyone would love one of those. Also, that little fairy on your backpack is super cute, too. That's Dodoko, my best friend. We always go fish blasting together in Starfell Lake. Oh, Dodoko? Yep. My mom says that when a Dodoko is born, it rides the wind and goes off on a big adventure. Ride the wind and go off on a big adventure? Klee, your mom sounds like a very cool person. Yep, my mom is the best and most awesome person ever. And Yoimiya, Iwao was right. You're a really cool person too. Thanks, Klee. I feel like we really get each other. We'll be great friends, I'm sure of it. It's so heartwarming. What? Hey, Klee! Since you like 4-leaf clovers so much, why don't I make a firework with a 4-leaf clover pattern and set it off for you? Yeah! And after the fireworks, we can go fish blasting with Dodoko. बमबारी करनी है दोनों को. Hold on a second. Fish blasting? बोलता रहा. No way. Albedo was pretty clear about that. Oh, oops. I got so excited that I completely forgot about that. The folks from the Yashiro Commission specifically warned me that no fireworks are allowed in Inazuma during the Iridori Festival. What? It's not allowed? But... Aww. Okay then. Hey, come on! You just made a new friend! This is a happy occasion. Yeah, we still have loads of things we can do. Right, just like Saika said. What do you say, Klee? Sounds like the Iridori Festival could be a real blast. Okay then, let's go! Here we are, the venue of the Iridori Festival. Outlander Brigade. When the wind of death blew towards the blonde samurai? By Kawabunga. Who's this Kawabunga? It's pronounced Kayabuki Ike. Outlander Brigade is a new series of mine. And when the wind of death blew towards the blonde... Outlander's Brigade? Kaya says that every good story has to have... Absolutely not. I would never allow such cliché. This is a book about betrayal, blood, and tears. A long and lonely struggle. A stubborn samurai's path... Oh, is that right? Well... Hey, miss! Don't go! Are you sure you don't want a copy? Flowers for Princess Fischl. Oh, look! That's right! Flowers for Princess Fischl. Nope. But Aunt Fischl always hangs out with Oz. Everyone in the Adventurers Guild knows. It's just like how me and Dodo... I wonder if... Oh, Klee, I'm afraid it can't be helped. Darn. It seems like even the Iridori Fest... There must be plenty of things you could... Yeah, like, Wait, so that's what you're suggesting? That's right! The Iridori Festival is a place for putting your work on display. You could show Dodoko's story for everyone here! Bingo! What do you think of that idea, Klee? Mr. Albedo taught me how to paint. That's very imaginative. I think we could even put the finished story... Yay! Perfect! Okay, so I have some paper. Yay! Let's go, let's go!
ओई मिया यस योई मिया और काजू का रीना नाना चाहिए यार। Motivated. We better catch up. Boring. Clee and I just had a discussion, and we've decided. We're gonna keep the content of the story a secret from you. Obviously, I can't tell you why. Or you can keep exploring the festival while we're busy in the shop. दोनों को अकेला छोड़ना पड़ रहा है। Come on, Yoimiya, Hello. we should get going. Let's go हाँ inside and start painting. खेल रहे हो? जोकर इतनी जल्दी क्या सीन है भाई? I was hoping that we could all paint together. खाना पीना what the fuck? Brian's got an idea. Come on, let's go around to the ऑफिस का windows मीटिंग and तभी take a जस्ट मीटिंग sneaky कंप्लीट peek. करके आया। अरे ऑफिस भाई ऑफिस जरूरी नहीं है। हाँ हाँ जरूर। क्या है? खेल रहे हो वैलो कि गेंशिन खेल रहे हो बैठ के? घर में 2 जेट थे भाई। क्या? So, what does अरे वैलो Dotaco खेल रहे हो do? बता जल्दी। अरे वो तो खेल लेंगे। Ooh, that sounds great. मुझे तो लगा था Is यार that what you're मिनिमम painting? शाम तक It तो looks नहीं आएगा। beautiful. Once you're done painting, let's go get it printed. We'll बड़ा print a बेशरम है। whole bunch of copies and go hand them out at the festival. Although वो क्या it'll कर रही cost a बेचारी lot अकेले? more to get it printed. वो भी सोने गई। Let me see if I've got enough saved up. तभी It's okay, कल Yoimiya. फ्लाइट था ना I उसका। have some more. Look. फ्लाइट था ना 50 more इसलिए। is probably not quite enough. Well, if we don't have enough, खेल ले we can भाई। ask the traveler सबसे for ज्यादा ideas. नफरत है। उन लोगों को सबसे ज्यादा नफरत है गेम से। मुझे आज तक समझ नहीं आता क्यों। Trouble him. पर है। आज तक हमको खुद I समझ should में just नहीं go आया। क्या? fish blasting to हमको earn खुद some समझ में नहीं more. आता। पर सच है ना? No हाँ। fish तुम blasting. गेम का नाम लो I'm भाई on ऐसे मतलब चिढ़ Then मचती है we've अगलों got no को। choice. We'll have जैसे to go see यही है Mr. सोतन। Albedo. Who's Mr. Al? He's my older brother. He's super duper smart. He can do, and he knows how to paint too. He paints On Holy karo. Chills, Kaya, Oh, is that right? Then I guess Mr. Albedo. an artist. Oh, that means he has 2 jobs. One as an alchemist, teaching Yoimiya. Let me show you something. Mr. Albedo. Wow, I can see the resemblance. All right. Hey, you can even write the story over here. Okay. Oh. Shoot! I didn't hear the. Dotaco sure had a lot of fun in Inazuma. Those two sound like they really did go on an adventure with Dotaco. They could. Now, we have to get Dotaco's story printed. अरे ये कितनी बड़ी स्टोरी है यार ये। हाँ? Please speak to President Trump. I'm just Here we are. This is the Yai Publishing House. Yai Publishing मजा आ House. गया नहीं ऐसे में? Ooh, it's Auntie Aratani. I know Auntie Aratani. लिटरली बुरा हाल था। आज यहाँ पे 3940 चला गया है। Auntie? Who's that calling me और मेरे auntie? रूम के ऊपर एक्चुअली रूम Oh, नहीं है। मेरे it's the रूम के little ऊपर girl who came with Mr. Calx. How can I help you, little girl? जिस रूम में मैं अभी हूँ। Auntie भाई Aratani, उस वजह से can ये you कमरा help me और get गर्म होता है। Dodoco's story यूजुअली क्या होता printed है so that लॉबी में एसी लगा everybody रहता है। can see it? उससे पापा Dodoco? मेरा रूम भी ठंडा हो जाता है पर मैं अपना दरवाजा Oh, बंद so रखता हूँ। you've been writing a story, स्टोरी huh? स्टोरी हाँ यार। Is Dodoco the main character? Not only that, Dotaco is also real. सिर्फ स्टोरी है इसमें कोई फाइट कोई कुछ नहीं है। Huh? I don't. We'd better explain this to her. Oh, I see. Oh, the मुझे भी deadline लग has रही है इसलिए तो passed कह रहा हूँ for कुछ बनाने accepting जा रहा हूँ। printing orders for the Iridori festival. तो वैलो नहीं खेलेगा? हम्म। Dodoco won't क्यों? be able to meet us. Oh, I'm sorry. खेल ले। चोकर भाई Oh, बोलो भाई। Clee. आराम What's करो that? जाके। You still have me and the traveler? दिमाग में something. दड़ा गेम आ जाए गेम खेल ले। कडल वडल करो थोड़ा। Is there any
way at तो all, वो we can गेम still खेल get ले this आजा printed. शादी से We can pay extra. And if you're बड़ा short on आराम है staff भाई, to help with the बड़ा आराम printing, है I can भाई। pitch in. Miss Yoimiya, I understand your sentiment, but I'm That's afraid how it's it not is. as simple as that. We've been printing many people's personal works for this festival, and a lot of the books are already well behind schedule. The printing press is already working overtime to try and catch up. At a time like this, we really can't squeeze any more jobs in. What do we do? Seems like we might have to give up on this idea. No, I won't let that happen. I remember this one time when I was little. Pop said he'd take me to the festival, but he was so busy with work that he forgot. I waited and kept wondering when Pops was finally gonna take me there. That night, I cried miserably. To this day, I still remember how sad I felt. If we can't get it printed, then I can paint. Over the next few days, I'll paint as many as I can. My. Yoimiya has quite a determined spirit. I like it very much. It's Miko and Albedo तेरे को too. We lethal heard esports पता है Devil? everything. उसमें वो आ गया मार्जिल। Oh, Lady Ai. क्या मजबूरी थी? It's okay, I know. You were just following the rules. Plus, we really are quite behind schedule with the printing. But our mission at Yai Publishing House is to bring dreams and happiness to the masses. Let me think. Oh, Yoimiya, little girl, you can print your book, but Of course, Lady Guji. Just tell us. Whatever this condition is, I am... dear me, it's nothing that horrendous. All I mean is, if you want to get your work printed now, there is only a small amount of space remaining in the book in question. Your book is too big, so you have to reduce. Is this a sacrifice that you're... Klee, Lady Guji is saying that we can print the book if we shrink it to half the size. Yup, I am. Thanks, Miss Gucci lady. हेलो मैं तो What ऑन an हूँ। adorable little girl. Devil. Well, that settles it. Devil Artani, बटूरा। make sure it gets printed with tonight's batch. Yes, अबे आ Lady रहा Ai. नहीं आ रहा I'll है get right जल्दी on it. बोल। 2 मिनट रुक जा यार। मेरे को भूख लग रही है सच Combining में the यार। prints is a plausible solution, but it'll cause a lot of extra work for the printing press. No problem. Just think of it as my greeting gift for little Klee. Hello. Besides, the Yai Publishing House will need your help with the illustrations अभी again interview next होना है? time, Mr. पूरे दिन Calx. से तू कर क्या रहा था? You could also consider it as my investment in you. All right, I won't Yeah? disturb you two any longer. Bye-bye Hello. now. Hello. Yay! Everything worked out perfectly. Now, we just need to wait for an update from the... Yoimiya, छोड़ो फिर traveler, अभी पहले मैं भी खाना खाने जा रहा thank you for keeping तीन Klee बजे। so 1 घंटे से exceptionally well खेलते हुए तो entertained कह for रहा me. हूँ। हाँ, जोकर जाओ सो जाओ। No worries. जाओ जोकर। Yes, you're right. Klee is family. Go after जोकर all. go। साले तू शांति से मार्केट निकल। भाई मैं क्या ही करूँगा मार्केट में, भाई जो करना है वो तो कर रहा हूँ। तो ये बोला तो मार्केट निकल सकता है। चलो कितने 4 बजे से बैठो खेलना। हाँ एक मैसेज कर देना। 4 से 6 खेलते। भाई अभी पूरा नहीं हुआ ये। चलो बाद में आता हूँ गाइस, कल करेंगे अपन ये स्टोरी कंप्लीट। इसको यहीं छोड़ देता हूँ मैं।